Hello dear children, myself Ramesh sir from Bidar, Karnataka. Since from 35 years I am in the teaching field of CBSE mathematics for the class 8th, 9th, 10th. Up to this I taught offline classes only. Now for the benefit of the children, I want to come online. So today I am taking the class for the class 10 quadratic equation, very important topic. We have to discuss about the quadratic equations. Before going to quadratic equations, we have to discuss about some what you learnt in your previous classes about the linear equation in one variable. What is linear, what is quadratic, we have to study. See, I am going to write one example here, 2x plus 5 equals to 7. Here, 2, 5, 7 are constants, x is variable. Nothing the power is 1 is the power. Here, if the highest power is 1, highest power of the variable is 1, then it is called a linear. It is called a linear. अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहा, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री. Degree of this equation is 1, then it is called linear. The general form of linear equation is written as ax plus see, the general form of linear equation is written as ax plus b equals to c. Now, what is the difference between that is a polynomial and a equation? Suppose I written in ax plus b only, it becomes a polynomial. If it comes equals, whatever may be it is equals, it becomes an equation. Now here the degree of the equation is 1, therefore it is a linear. Highest power is 1, therefore it is a linear. All these you studied in your basic classes. So, let us have to discuss about the definition of the quadratic equation. That is the definition of quadratic equation is simple on definition. An equation in one variable, the quadratic equation definition is an equation in one variable whose highest power is 2 is called quadratic. An equation is in one variable whose highest power is 2 is called quadratic equation. I will write one example. That is 2x square plus 5x plus 3 equals to 0. Here, it is in one variable only. Here also x, and the highest power is 2. An equation in one variable whose degree is 2, whose highest power is 2, is called quadratic equation. Now I am going to write an equation in one variable, an equation in one variable whose highest power is 2 is called
quadratic equation. Quadratic equation. Example: 3x square plus 5x minus 2 equals to 0. X square plus x plus 3 equals to 0, and etc. Or the definition is also defined as, the equation of the form, ax square plus bx plus c equals to 0. The equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 is called quadratic equation. I am going to write QE, it shows that short form of the quadratic. Is called quadratic equation, where a comma b comma c are constants and a is not equals to 0. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए इसमें. b में भी 0, c में भी 0. b 0 हो सकता, c 0 हो सकता, मगर ये 0 नहीं होना चाहिए. सपोज हम कंसीडर करेंगे ये 0 हो गया. लेट अस assume a is 0. Let us assume a equals to 0. Therefore, ax square plus bx plus c equals to 0. What happens? Let us see. 0 into x square plus bx plus c equals to 0. 0 into any term, what we get? It is 0 only. Therefore, what left here? Bx plus c equals to 0. If a equals to 0, the quadratic equation reduces to linear equation in one variable. Try to understand. The equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 is called quadratic equation, where a comma b comma c are constants and a should not be equals to 0. This is the definition of quadratic equation. Now, next we are to discuss quadratic equations and their roots. Quadratic equation and their roots, or roots also called their zeros. Now let us we have to discuss what is the meaning of a root or what is the meaning of a zero. Just I will give an example of linear equation in one variable. Let us check 2x plus 5 equals to 7. This is linear equation in one variable. We have to solve this one. 2x is equals to 5 minus 7. That is the one, 7 minus 5. Now 2x is equals to 2. X equals to 2 by 2. We got the value of x is 1. 2 by 2 we get 1. The value of the variable what we obtained, variable का value क्या आ गया, that is called the root or that is called zero. Variable का value क्या आ गया उसको क्या बोलते हैं, root or zero. अब हमारे को x का value एक ही आ गया और एक याद रखना है इसमें, जो इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना रहता उतने रूट्स आते. अब इसका लीनियर है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए उसका रूट एक ही आ गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो हाईएस्ट पावर 2 रहता. अब उसके वेरिएबल के वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए. कंपल्सरी यू हैव टू गेट 2 वैल्यूज. Just I gave the example. What is the meaning of roots or zeros? The value of the, after solving, what we get the value of the variable, those are called roots or those are called zeros. Okay. Now let us try to discuss quadratic equation and their roots. To find the roots of the quadratic equation, we have some methods. That is methods to find roots of quadratic equation
or zeros of quadratic equation. First method, by splitting the middle term. By splitting the middle term. Second one, formula method. Formula method. Third one, method of completing the squares. There are three methods. Now, first by splitting the middle term, second formula method, third method, method of completing the square. It is deleted from CBSE syllabus. Deleted from CBSE syllabus. Therefore, it is not necessary to discuss the third method. We have to discuss only first method and second method by splitting the middle term and by formula method. Now one by one you have to discuss. Let us go. Method 1. Method 1 by splitting the middle term. Middle term. In that one, type 1, I have divided type 1, type 2. Type 1. Now, our general quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. In a type 1, the equation is the coefficient of x square is always 1 in type 1. In a type 2, the coefficient of x square is other than 2. Just I will give one example. Example of type 1. X square plus 2x plus 1 is equal to 0. Here nothing means the coefficient of x square is 1. कुछ भी नहीं है बोले तो x square का coefficient क्या होता है 1 होता है. Then suppose I written 2x square plus 3x plus 5 equals to 0. Here the coefficient of x square is other than 2. It comes under type 2. This one I divided, not in the textbook everything. For the convenient to become an easy to the children, I divided as the type 1 and type 2. In type 1, the coefficient of x square is always 1. In type 2, the coefficient of x square is other than 1. Now we have to discuss the problem belongs to type 1. That is, find the roots. Find the roots of the following quadratic equations. Find the roots of the following quadratic equations. Example number 1. First try to understand. Okay, let us see one example. X square plus 5x plus 6 equals to 0. Coefficient of x square is 1. It is on type 1. Now, what is the meaning of splitting the middle term? ये 5 को split करना. इस 5 को कैसा split करना? Any two terms, कौन सा तो 2 term multiply करे तो 6 आना. वही terms add or subtract करे तो middle term आना. Then any two term, अब हमको 6 का practice करेंगे. 3 2 is 6. 3 plus 2 is 5. Multiply करें तो last term आना.
वही टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो मिडिल टर्म आना। अब समझना कि ऐड करे तो आना, सब्ट्रैक्ट करे तो आना, वो कैसा मालूम है। अब अपने को 6 1 जा भी आता, 6 1 जा 6 भी आ जाता, 6 - 1 5 हो जाता, दोनों भी आते। दोनों में से कौन सा चूज करना बहुत जरूरी है। इसमें एक रूल याद रखो, आपको कौन सा भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा वो रूल। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट टर्म पॉजिटिव रहा, in the quadratic equation, if the last term is positive, then the middle term splitted as by adding. If the last term is negative, the middle term is splitted by subtracting. This is a very important step you have to remember. अब ये प्रॉब्लम में लास्ट टर्म पॉजिटिव है, उसलिए हमको ये यूज नहीं होता सब्ट्रैक्ट का, हमको क्या हो जाता, ए यूज हो जाता। Therefore, it can be written as x square 3 plus 2 plus 6 equals to 0. X square, open the bracket, 3x plus 2x plus 6 equals to 0. अब ये दो टर्म ग्रुप करना है, ये दो टर्म ग्रुप करना है एक तरफ, इन दोनों में x को कॉमन ले लेंगे। इधर x स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, अंदर बच गया एक x, प्लस ये x बाहर आ गया, अंदर बच गया 3, प्लस ये 2 को कॉमन ले लेंगे, x बच गया, प्लस ये जो कॉमन लेते उसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 0। देन और इन दोनों में इधर भी x plus 3 इधर भी x plus 3 है, that x plus 3 we have to take common। वो x plus 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट पे क्या बच गया, x plus 2 बच गया, इक्वल्स टू 0। नाउ अप टू ऐसा स्प्लिटिंग हम नाइन्थ में पढ़े, पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग। देन नेक्स्ट 10th वर्क इज वी हैव टू इक्वेट ईच ब्रैकेट टू 0, that is x plus 3 equals to 0 and x plus 2 equals to 0। अब वो 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, x equals to -3, x equals to -2। अब x का कितने वैल्यू आ गए अपने को, 2 आ गए, क्योंकि डिग्री 2 है, मींस x equals to -3 and x equals to -2 are the roots of the given quadratic। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, उसके रूट्स x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2 आ गए। ये once again I am going to repeat, in a quadratic equation if the last term is positive, the middle term is splitted as by adding the factors. If the last term is negative, the middle term is splitted by subtracting the factors. Okay, let us say one more example, that is same example I will do, little bit different. Solve, the heading comes it as solve. Solve means find the value of the variable. X square plus 5x minus 6 I will write here. In the last problem we discussed about the plus 6. Now we have to discuss about the minus 6 here. Let us see. दिमाग में रखना, अब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म चेक करना, 6 है, कौन सा 6 है, -6 है, -6 पर तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होता, बाय सब्ट्रैक्टिंग, दैट इज अब 6 के फैक्टर्स करेंगे, इस 6 के फैक्टर्स 3 into 2 6 हो जाता, 3 plus 2 5 हो जाता है, वो क्या है, ग्रेट। और ये 6 के फैक्टर 6 1 जा 6 भी होता, 6 - 1 is 5, कौन सा चूज करना, लास्ट टर्म क्या है, नेगेटिव, therefore you have to use this factor। okay, therefore it can be written as x square plus, इधर जो सिंबल रहता 6 - 1 into x minus 6 equals to 0। समझ में आ रहा होगा सभी को, hope all of you understood, that is x square, now you open the bracket, 6x minus 1x, 1x नहीं लिखना, x minus 6 equals to 0। ये दो ग्रुप करेंगे और ये दो ग्रुप करेंगे, इन दोनों में x को कॉमन आ गया,
x प्लस 6। इधर जो सिंबल रहता है वही लिखना, इसके साथ कुछ भी नहीं है बोले तो 1 रहता है, 1 को कॉमन ले लेना। क्या बच गया ब्रैकेट में x, कौन सा x बचता? पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव बाहर लिए बोले तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव का नेगेटिव होता, नेगेटिव का पॉजिटिव होता। मैं अब ये क्या होना प्लस 6 इक्वल्स टू 0। I will give an example how it is. Again x plus 6 is common. Left in the bracket x minus 1 equals to 0. Now equate this bracket to 0. That is x plus 6 equals to 0 and x minus 1 equals to 0. Transfer the constant to that side. X equals to minus 6 and x equals to positive 1. These two are the roots of that quadratic equation. Oh, x square plus 5x minus 6 का ये दो zeros हो गए, वो दो roots हो गए उसके में। Now अब माइनस कॉमन लिए तो ब्रैकेट में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कैसा होता देखेंगे। माइनस एक्स माइनस वाई है, लेट अस डू इट। ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का क्या होगा प्लस, ये माइनस का क्या होना प्लस। अब ब्रैकेट ओपन करके देखो, कुछ भी नहीं बोले तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। इफ यू टेक ए नेगेटिव कॉमन inside the bracket, positive changes to negative and negative changes to positive. Now let us discuss till so many examples of this one by the method 1. Solve x square minus 3x minus 10 equals to 0. फर्स्ट चेक करो टाइप 1 में आता नहीं बोल के, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 रहना उसने टाइप 1 में आ जाता। अब 10 के फैक्टर्स करना, दो टर्म मल्टीप्लाई करे तो 10 आना, ऐड करे तो 3 आना, सब्ट्रैक्ट करे तो 3 आना, ये मालूम है। अब लास्ट टर्म आप चेक करो, लास्ट टर्म क्या है माइनस है, लास्ट टर्म इज माइनस। आई टोल्ड अर्लियर if the last term is negative we get the middle term factors are by subtracting। अब 10 के फैक्टर्स करेंगे, इधर साइड में करेंगे। 5 to the 10, 5 minus 2 we get it is 3। don't about we need minus 3, don't bother about it, बड़े में छोटा माइनस करेंगे बस। then x square ब्रैकेट यूज करेंगे, 5 minus 2 into x minus 10 equals to 0। सब्ट्रैक्ट करे तो आना, क्योंकि लास्ट टर्म नेगेटिव। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर। once again I am going to tell, if the last term is negative by adding, by subtracting we get to the factors, if the last term is positive by adding we get to the factors। x square ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 ax को भी इंटू करना, 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो आप सेपरेट करके देखो, 5x में 2x गया, 3x ग्रेटर नंबर से माइनस 3 वही आ गया। अब ये दो टर्म ग्रुप करेंगे, x कॉमन, x माइनस 5, इधर जो सिंबल रहता वही प्लस, ये 2 और 5 2 का टेबल में जाता, 2 ले लें 2, ये 2 से इसको 2 को डिवाइड करे बोले तो 1 बचता, उसलिए ओनली x माइनस, ये 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 is 10 equals to 0। Take out x minus 5 is common, left in the bracket x plus 2। आगे क्या करना है, we have to equate each bracket to 0, हर एक ब्रैकेट 0 को इक्वेट कर देंगे। x minus 5 equals to 0, x plus 2 equals to 0। 5 कांस्टेंट उधर ट्रांसफर करेंगे, x equals to 5 and x equals to minus 2। These two are the zeros of this quadratic equation, x square minus 3x minus 10। Hope all are following this one. Till I will solve so many examples, you will get the clear, every child has to understand। हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स क्या है, सभी समझते कि मैथमेटिक्स बहुत बर्डन है बोल के। I will make mathematics is so easy, you join my classes, easy to easy mathematics। Don't feel mathematics is very difficult,
मैथमेटिक्स if you practice it, if you work hard, मैथमेटिक्स become so easy, बहुत easy इंटू करेंगे. इधर कुछ भी सिंबल नहीं होगा तो प्लस रहता, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू एक्स 4x, नहीं प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. और ये दो ग्रुप करेंगे, ये दो ग्रुप करेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले लिए, x माइनस 4. इधर जो सिंबल रहता हो ये अब माइनस कॉमन ले रहे हम, माइनस कॉमन ले, ये 4 और 16 4 से डिवाइड होता, 4 भी कॉमन लेंगे. ये जो कॉमन लेते हैं इन दोनों को डिवाइड करना, 4 1 जा 4, 1 बचता, 1 बोले तो 1x बचता, 1 नहीं लिखना है x. अब माइनस कॉमन लिए बोले तो प्लस का जाके क्या होना, माइनस होना. If you take minus is common inside of the bracket, the positive changes to negative and negative changes to positive. ये 16 को डिवाइड करें, 4 4 था equals to 0. Again x minus 4 is common. ये x minus 4 common ले ले, ब्रैकेट में इधर x बच रहा, minus 4 बच रहा, equals to 0. Now equate this bracket to 0. x minus 4 equals to 0 and x minus 4 equals to 0. That is, अब 4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, x equals to 4 and x equals to 4. दोनों रूट सेम आ गए इधर, ए भी x का वैल्यू 4 है, ए भी x का वैल्यू 4 है. अगर दोनों रूट सेम आ गए बोले तो उसको एक वर्ड बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिपीटेड रूट्स और सेम रूट्स. वी कैन से रिपीटेड रूट्स और सेम रूट्स. लेट्स गो टू वन मोर एग्जांपल. Till I am in type 1 only, until the children has to become a perfect. हर एक बच्चा परफेक्ट होना है मैथमेटिक्स में. x square minus 4x plus 4 equals to 0. Again last term is positive, उसलिए 4 का फैक्टर्स कैसा है ना, ऐड करें तो that is 4 के फैक्टर्स करेंगे, 2 into 2, 2 into 2 is 4. 2 plus 2 is 4. That is x square minus bracket 2 plus 2 into this x as it is plus this 4 as it is equals to. Now open the bracket. Bracket को open करेंगे. X square plus into minus, minus 2. Minus 2 into x is minus 2x. Plus into minus, minus 2 into x is 2x plus 4 equals to 0. और ये दो टर्म ग्रुप कर लेंगे. x कॉमन, x माइनस 2. जो इधर जो सिंबल रहे तो कंपल्सरी फर्स्ट लिखना हो सिंबल. ये 2 और 4 2 से डिवाइड होता, अब 2 कॉमन लेंगे. 2 1 जा 2 डिवाइड होने के बाद x बच गया. माइनस कॉमन लिए, प्लस का क्या बचना है इधर, माइनस. 2 2 जा 4 is equals to 0. Take out x minus 2 is common. Left in the bracket x minus 2 only equals to 0. Now equate each bracket to 0. X minus 2 equals to 0 and x minus 2 equals to 0. Over here constant को उधर ट्रांसफर करेंगे. x equals to 2. x equals to 2. Again here also we got both are the same value. Therefore this quadratic equation has a repeated roots. Same value, x का वैल्यू दोनों भी सेम आ गए. लास्ट प्रॉब्लम में भी सेम आया था, ये प्रॉब्लम में भी सेम ही आ रहा है. इधर उसमें 4 4 आया था, इसमें 2 और 2 आ रहा है. उसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रूट्स, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड रूट्स और इक्वल रूट्स वी आर गोइंग टू से. Let us solve one more. X square plus x minus 156 equals to 0. अब लास्ट टर्म नेगेटिव है, सबट्रैक्ट करें तो आना, मल्टीप्लाई करें तो 156 आना, सबट्रैक्ट करें तो 1 आना. कुछ भी कोई सेट नहीं बोले तो 1 होता है इधर. अब ये बड़ा टर्म है, हमको ओरली नहीं मालूम होता 156 कौन सा टेबल में आते, दो टर्म कौन सा मल्टीप्लाई. उसलिए क्या करना है, ये 156 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है. We have to find the prime factors of 156. 2 7 the 14, carry 1 2 8 the 16.
2 3 जा 6 कैरी 1 2 9 जा 18, ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि यूनिट प्लेस में ऑड नंबर है। 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 1 जा 13। ओके, हम प्राइम फैक्टर्स करें इसका। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमारा कॉमन सेंस यूज करके इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इधर क्या है 13 into 12, 13 into 12, 13 into 12 is 156। अब लास्ट टर्म नेगेटिव है, सबट्रैक्ट करें तो है ना, 13 minus 12 is 1। ऐसा हम फैक्टर्स करके हम एडजस्ट कर लेंगे उसको। नाउ देयरफॉर इट इज स्प्लिटेड एज x square प्लस 13 minus 12 into x minus 156 equals to 0। x square plus 13x प्लस से इंटू करें तो ये था प्लस इंटू माइनस माइनस 12x minus 156 equals to 0। ये दो ग्रुप करेंगे, x कॉमन आ गया, व्हाट लेफ्ट इन द ब्रैकेट x plus 13, इधर जो सिंबल है वही सिंबल कॉमन, देन 12, वो दोनों भी 12 से डिवाइड होता, x माइनस कॉमन ये प्लस होना 13। ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो आता वही आता सेकंड ब्रैकेट में कंपलसरी। व्हाट वी गेट इन द फर्स्ट ब्रैकेट सेम ब्रैकेट विल गेट इन द सेकंड। अगर अलग आ रहा बोले तो हम गलत करें बोल के मालूम है, इक्वल्स टू 0। नाउ x plus 13 is common, left in the bracket x minus 12 equals to 0। now equate this bracket to 0, x plus 13 equals to 0, x minus 12 equals to 0, x equals to minus 13 and x equals to 12। these are the two zeros of the quadratic equations, x square plus x minus 156, x equals to minus 13 और x equals to 12। ये दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी हम टाइप 1 करें, क्वाड्रेटिक इसका कोएफिशिएंट 1 ही है। फर्स्ट याद क्या रखना है, लास्ट टर्म नेगेटिव बाय सब्ट्रैक्टिंग, लास्ट टर्म पॉजिटिव बाय एडिंग। वन मोर एग्जांपल, ಈಗ ಎಷ್ಟೈತಿ 40 minutes ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ x square plus 5x minus 750 is equals to 0। that is 750 का फैक्टर्स करेंगे, सिंपल आ जाता, that is 30 into 25, 25 3 is 75, ऐसा याद रखना, that is 30 minus 25 is 5। प्राइम फैक्टर्स करे तो भी आ जाता, बहुत लंबा हो जाता, ये सिंपल इजीली मालूम होने का है। x स्क्वायर प्लस 30 minus 25 into x minus 750 equals to 0। open the bracket, x square plus 30x minus 25x minus 750 equals to 0। x कॉमन ले लेंगे, x plus 30, इधर जो सिंबल रहता है वही 25 का टेबल में 75 आता है, 25 3 is 75, उसलिए हम 25 को कॉमन ले लेंगे, बच गया इधर x, माइनस कॉमन ले, माइनस का क्या होना प्लस, 25 3 is 75, 0 as it is equals to 0। चेक करो दोनों ब्रैकेट सेम है नहीं बोल के, अगर सेम रहा हम करेक्ट करके करे बोल के मालूम हो जाता है, अगर कुछ तो इधर गलत आया we done wrong anywhere। here also x plus 30, here also x plus 30, take out x plus 30 is common, left in the bracket x minus 25 is equals to 0, equate this bracket to 0, that is x plus 30 equals to 0, x minus 25 equals to 0, therefore transfer x equals to minus 30, x equals to 25,
These are the two zeros of the quadratic equation, x square plus 5x minus 750. Okay, dear children, this is about the type 1. Till we have so many problems. For your work, I will give the problems. Then, in the next video, we have to discuss about the type 2. In the type 2 is the coefficient of x square is other than 1. And the process is same. If the coefficient of x square is other than 1, if the last term is negative by subtracting only, if the last term is positive by adding only, process everything is same. But little bit different is the finding the factors. We have to discuss in the next video type 2. Then after completing in the type 2, we have so many varieties of problems. Okay, after completing this type 1, if the type 1, type 2 we completed, then the method 1 completes, then we have to go for the formula method later on. Okay, thank you children. Don't feel that mathematics is difficult. I will make mathematics so easy, and I will go with the basic. Those don't have the basic, I will go with the basic. Please more and more join my classes, and tell to your friends also to join my classes. Now I am leaving my free videos on YouTube and Facebook, all those, and Instagram also. Listen, see my videos and try to practice, try to understand the concept. Later on, after a few days, I am going to take the live classes also, free of live classes. You join the live classes and tell your friends to join my live classes also. I will go in detail, fully the problems which are going to appear in exam also I will solve. Same type of problems are going to appear, because every year what I am going to solve, same type of problems are going to appear in your annual exam. Okay, thank you dear children.